So आज भी रात में बाबा कह नहीं मैं कल घर गया वहाँ चाबी आया, चाबी ने फौरन एसी चलवा दिया। मैंने कहा भाई गर्मी है एसी चलाओ। So, as far as the development of lung is considered, you are seeing the first diagram in front of you. This is the first time when your diverticulum, respiratory diverticulum, is appearing on the 24th and the 25th day within the region of the cervical region, within the region of the neck. This is the first diagram that you are seeing, which is also present in your book, in which you are seeing the embryo, which is approximately 25 days old, and 25 or 24th or 25 days old embryo, with just showing the relation of the respiratory diverticulum to the heart. So initially, the brownish structure that you are seeing is the heart in front of you, and behind that, you are seeing the presence of the lung part. Okay, behind that, you are seeing the presence of the lung part in the in the diagram number B, the bluish structure. So there is the development of the diaphragm. There is the development of the lung. So in the next slide, you are seeing that anterior या आप उसे कह लो ventral to the foregut, येलो जो आपके पास लाइंस आपको नजर आ रही हैं, येलो सी जो लाइंस नजर आ रही है, दिस इज द फोरगट. और फोरगट के अंदर आपको जो है वो ब्लू टाइप का जो एरो नजर, ब्लू टाइप की आउट पॉकेटिंग, आउट पाउचिंग नजर आ रही है इन द डायग्राम नंबर ए. यू आर सीइंग द प्रेजेंस ऑफ द लंग बड. ठीक है ना, ये लंग बड जो है वो अराइज हो रही है. So let's start up with the slide readings. So the lung bud lined by the endodermal derivative derived from endoderm. Basically, the lungs which are lung buds are lined by the endoderm. ठीक है, जितनी भी आपकी lungs की जो bud है ये line हुई हुई है आपके endoderm से, which is derived epithelium differentiates into respiratory epithelium, which lines airways and specialized epithelium that lines the larynx, the trachea, the bronchi, bronchioles, and the alveoli. So ectoderm contributes basically whenever you are talking about the ectoderm. So ectoderm is there for the contribution or for the formation of the innervation basically. So mesoderm is basically responsible for the blood vessels, the smooth muscles, cartilage, and other connective tissue. So as far as your lungs are considered, as far as the development of your lung is considered, so the next slide, you are just going through the development of the human lung, which arises from the laryngotracheal grooves. Initially, the lung bud is open communication with the foregut, as you have seen that in the previous diagram, as you have already seen that in the previous diagrams that it arises ventral to the foregut. फोरगट के अंदर से एक येलो वाली लाइन जो हमने पहले देखी थी, उसके अंदर ब्लू एक आउट पॉकेटिंग निकली हुई थी, वो लंग बड थी. तो इनिशियली देयर इज एन ओपन कनेक्शन of the lung bud with the foregut. ठीक है ना. So the larynx, the trachea, and the lungs begins to form during the 4th week of the development, embryonic development. So they are getting appeared, they are getting prepared, they are getting formed. ठीक है ना, in the time of the 4th week, which is about 24th or 25th day. ठीक है ना, begins to form during the 4th week of the embryonic development. So at this time, the respiratory diverticulum or the lung bud appears ventral to the caudal portion of the foregut. यानी कि आगे है, ventral है, and caudal portion ऊपर से लेके नीचे की तरफ जो है वो grow करना शुरू करेगी towards the within the foregut. So the location of the diverticulum along the gut tube is directed by the various signals which are coming up from the growth factors. Basically, there are several growth factors in which the fibroblast growth factor number 8 is very responsible for its formation, and this is also mentioned in your books also.
So the location of the diverticulum is directed by the various signals from the surrounding mesenchyme, including fibroblast growth factors that I've already told you, in which the fibroblast growth factor 8 is very responsible for this formation. So this is somewhat associated with the molecular regulation. So as the lung bud grows, the distal end enlarges to form the tracheal bud. So distal end जो होगा वो क्या बना देगा, उसमें tracheal bud बनाएगा. At at the same time, the future trachea separates from the foregut through a foramina or the formation of the tracheo-esophageal ridge. ठीक है ना, जिसके बाद में क्या होता है, द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे ट्रेकियल इसोफेजियल रिज बन जाएगी. ठीक है, सबसे पहले आपके पास लंग बट की फॉर्मेशन आई वेंट्रल टू द फोरगट. फिर जाहिर सी बात है कि इसने फोरगट से अपने आप को सेपरेट करना है, तो यहाँ से ट्रेकिया या लंग बट में से, ट्रेकिया में से और इसोफेगस के दरमियान में एक बॉर्डर आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो है, इसकी वजह से आपके पास जो है वो लंग्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. ये लंग बट सेपरेट हो जाएगी आपकी इसोफिगस से. सो एट द सेम टाइम, so the future trachea separates from the foregut through the formation of the tracheoesophageal ridge, which fuse to form the esophageal septum, which is getting it fused to form the tracheoesophageal septum. So the respiratory primordium है, primordium मतलब initiator है, maintains its communication with the pharynx through the laryngeal orifice. यानी कि अब ये पूरा एक कनेक्शन इनका अपना बनना शुरू होने वाला है, जिसका कनेक्शन किसके साथ होगा, फेरिंग्स के साथ होगा, और आगे जाके लैरिंग्स के साथ इसका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा. यानी कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले एक लाइन जो थी, एक बर्ड अपीयर हुई फोरगट के अंदर. फोरगट के अंदर जब वो बर्ड अपीयर हुई है तो उसने अपने आप को बाद में सेपरेट किया फोरगट से. फोरगट से उसने अपने आप को सेपरेट जब कर दिया हुआ है, जब फोरगट से सेपरेट उसने अपने आप को किया है, तो उसका कनेक्शन जो है वो आप ट्रेकिया आगे की तरफ आ गया और आपके पास इसोफेगस पीछे की तरफ चला जाना चाहिए, विच इज अ नॉर्मल सिनारियो दैट हैज टू अपीयर. और इसके साथ साथ इस लंग बट के अंदर जो है वो ग्रोथ होना शुरू करेगी. और जब ग्रोथ होगी तो अभी हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर हमें जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई की फॉर्मेशन, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, एल्वियोल्स, ठीक है, ये सारी चीजें, लैरिंग्स और ये सब फॉर्मेशन अभी होना शुरू हो रही है, जो हमने अभी देखनी है. लेकिन इन द मीनवाइल हम एक चीज देख लेते हैं, क्लिनिकल कोरिलेट देख लेते हैं कि जिस वक्त ये सेपरेशन कर रहा था इन द डायग्राम नंबर ए, द ट्रेकिया इज इनकम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द फोरगट. फोरगट का जो काउडल पोर्शन था, इस डायग्राम नंबर ए में आप देख रहे हैं कि काउडल पोर्शन अभी भी इसोफेगस के, अभी इसोफेगस का जो काउडल पोर्शन है, जो विच इज डायरेक्टेड बाय द ब्राउनिश और या ऑरेंजिश सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये अभी भी आपके ब्लूइश ट्रेकिया के साथ जो है वो अभी भी जुड़ा हुआ है. ठीक है, इसके बाद डायग्राम नंबर बी में आप देख रहे हैं कि ट्रेकिया तो बिल्कुल सेपरेट है, ट्रेकिया बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन इसोफेगस जो है वो उसने क्या हुआ है, वो भी सेपरेट हो गया. इसोफेगस से अपना कनेक्शन जो है वो क्या हुआ है, वो भी टूट गया है. दिस इज अ क्लिनिकल कोरिलेशन, इसोफेजियल एट्रेसिया. तीसरी चीज क्या देख रहे हैं आप इस डायग्राम के अंदर, कि इसोफेगस ने अभी भी अपना कनेक्शन जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ है, एक फिस्टुला बनाया हुआ है, अपनी ओपनिंग जो है वो ट्रेकिया के साथ मेंटेन करके रखी हुई. चौथे में क्या देख रहे हैं आप, डी के अंदर क्या देख रहे हैं कि इसकी क्रेनियल एंड, जो इसका ऊपर वाला एंड है, या सुपीरियर एंड कह लें या क्रेनियल एंड कह लें, ये अभी तक जुड़ा हुआ है. ठीक है, और फोर्थ के अंदर क्या है कि इसका सुपीरियर और इंफीरियर एंड या क्रेनियल या काउडल एंड जो है वो अभी भी इन कनेक्शन है with the esophagus. So this is somewhat a correlate when this tracheoesophageal septum is formed and this tracheoesophageal ridge is formed, and it has to get separated. Normally it has to separate, but if there is any kind of issue, if there is any kind of problem, so it does not get separate, it does not get separated from the esophagus, from the trachea. So your esophagus is either completely separated, or either completely not separated, or either it is partially separated. So these are the clinical correlates that you have seen in front of you. So now you are seeing a diagram in which this is the formation of the alveoli
in which you are just seeing the formation of the alveoli. The tracheoesophageal, we are just discussing the further development. The tracheal buds divides into two primary bronchial buds. ठीक है, जिसमें आपके पास टू प्राइमरी ब्रोंकाई आपके पास फॉर्म हो रहे हैं, राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. So the tracheal buds divides into two primary bronchi, okay, during the fifth week of the development, and the bronchial buds enlarge to form the right and the left main bronchi. These continues to develop into the secondary and the tertiary bronchi. Now, technically speaking, you are forming a bronchial tree out there. ठीक है, यहाँ पर bronchial tree बन रहा है, यानी कि bronchial प्राइमरी ब्रोंकाई की आपके पास फॉर्मेशन है, फिर आपके पास सेकेंडरी ब्रोंकाई की फॉर्मेशन है, फिर आपके पास टर्शियरी ब्रोंकाई की फॉर्मेशन है, फिर आपके पास एल्वियोलाइज की फॉर्मेशन है. ठीक है ना, और लंग्स की आप जो सराउंडिंग मेसेनकाइम है उसके ऊपर लंग्स की फॉर्मेशन दे रही है, और आपके पास जो है पूरा लंग्स जो है वो फॉर्म हो रहा है, और इवेंचुअली इट इज गेटिंग रीच्ड इनटू द diaphragm, into the pleuropericardial cavity. It is getting into the pleuropericardial cavity that you have already discussed, or you have already seen in the uh, in the in the session of that body cavities, in the session of the diaphragm, basically. So this is again a diaphragm. This is again a model in which you are seeing the presence of the lung part formation. ठीक है, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि अब आपके पास ओरोफेरेंजियल एरिया मौजूद है, और आपके पास जो है वो नीचे की तरफ लंग बट की फॉर्मेशन हो रही है, विच इज गेटिंग काउडली, विच इज मूविंग काउडली, आहिस्ता आहिस्ता उसने नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर. सो again, there is a diagram in which you are seeing the presence of the larynx and the epiglottis out there. ठीक है ना, in which you are seeing the yellowish the bluish structure, which is known as your yellow one is known as your epiglottis, and the blue one is going to develop your arytenoid swellings, which are responsible for the formation of your larynx, basically. So in the next slide, we are just going up with the development of the larynx. So cartilages and the muscles basically originate from the mesenchyme of the fourth and the sixth pharyngeal arches. This is your MCQ. Try to remember. Okay? And basically, the cartilages and muscles which are getting originated from the mesenchyme, they are from the sixth and fourth and the sixth pharyngeal arches, which are eventually transformed into the thyroid, cricoid, and arytenoid cartilage. इसमें से यानी कि आपके पास जो सराउंडिंग मेसेनकाइम्स थे, उसने जो है वो कार्टिलेजेस बनाई. कौन कौन सी कार्टिलेजेस बनाई थी? जिसका नाम था थायराइड कार्टिलेज, जिसका नाम था रेटिनॉइड कार्टिलेज, जिसका नाम था कैरोटिड क्रिकॉइड कार्टिलेज. So the characteristic of adult shape of the laryngeal orifice can be recognized at this time. ठीक है ना? So till that time, that the laryngeal epithelium also proliferates rapidly, resulting in the temporary occlusion of the lumen. शुरू में ऐसा लगता है कि जो है ना ये ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, और आपके पास जो वक्ती तौर पे ये एक ऑक्लूजन हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स यहाँ पे आके जमा हो रहे हैं, तो इट सीम्स टू हैव अ टेम्पररी ऑक्लूजन. ठीक है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the passage of time, vacuolization and recanalization अक्कर, यानी कि उसके अंदर जो है वो वापस से फिर से वो सेल्स जो है वो उनकी अपोप्टोटिक सेल डेथ होगी, और वो सेल्स जो है वो बाद में अपने अंदर पैसेज बना लेंगे. रिकैनलाइजेशन का मतलब वापस से उसके अंदर कैनाल फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड प्रोड्यूस अ पेयर ऑफ लेटरल रीसेस एंड द लैरिंजियल वेंट्रिकल, जिसकी वजह से अब आपके पास लैरिंग्स का रीसेस यानी कि स्पेस और उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की जो है वो formation हो रही है. So these recesses are bound by folds of tissues that differentiate into false and the true vocal cords. तो ये जो recesses है, ये spaces हैं, कैसे रुक जाती हैं, कैसे बाउंड हो जाती है, कैसे कवर हो जाती है by the surrounding mesenchyme, यानी कि सराउंडिंग जो टिश्यूज हैं, वहां पे mesenchymal टिश्यूज है, वहां पे क्या करेंगे, इनको रोकेंगे, और जिससे वो सराउंडिंग mesenchymal टिश्यूज है वो आगे चलकर क्या बना देते हैं, यहाँ के ऊपर false and the true vocal cords की formation कराएंगे. So technically speaking, you have to remember this chart by heart. So lung is getting development, the maturation of the lung basically. So it is getting, it has having that 4 periods in. ठीक है ना?
लंग की फॉर्मेशन के 4 पीरियड्स हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट इज द सीरोग्लैंडुलर पीरियड, द सेकंड इज द कैनालिकुलर पीरियड, द टर्मिनल सेक पीरियड एंड द एल्वियुलर पीरियड, ठीक है। You have got the terminal sec period and you have got the alveolar period in it, in which you have to remember by heart. This chart should be remembered by heart because okay, आपके पास जो pseudoglandular period है, it starts from the 5th to 16th week, 5 से 16वें हफ्ते तक ये आपके पास चल रहा है. So branching has continues to form the terminal bronchioles. No respiratory bronchiole or alveoli are formed at this time. अभी तक कोई जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल नहीं बना, कोई एल्विली नहीं बनी. कैनालिकुलर पीरियड के अंदर क्या है, 16 से 26 वीक का है. Each terminal bronchiole divides into 2 or more respiratory bronchioles, which in turn divide into 3 to 6 alveolar ducts. The terminal sac period, which is of about like 26 week up till the birth. तो टर्मिनल सैक पीरियड के अंदर क्या होगा, टर्मिनल सैक यानी कि प्रिमिटिव एल्वियुलाई, शुरू के एल्विलीज जो इनिशियल एल्विलीज बने हैं, फॉर्म एंड द कैपिलरी एस्टैब्लिश अ क्लोज कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ से आपको गैसियस एक्सचेंज होना है टिल बर्थ, यानी कि बर्थ तक के सारे प्रोसीजर है. एंड एल्वियुलर पीरियड, एल्विलीज कंटिन्यू टू ग्रो अप टिल द ईयर ऑफ 2 years ऑलमोस्ट, अप टिल चाइल्डहुड भी बहुत सारे लोग इस पे है, एग्रेड है, यानी कि आप समझ लें कि 10 से 11 साल की एज तक, 10 साल 8 साल की एज तक, ठीक है ना. मैच्योर एल्विली हैव वेल डेवलप्ड एपिथेलियल एंडोथेलियल कैपिलरी कॉन्टैक्ट्स विद इट, ठीक है ना. एपिथेलियल कॉन्टैक्ट्स चल रहे हैं और ये इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ठीक है. You are seeing that you have got the pharynx, you have got the trachea, and the surrounding mesenchyme has formed the lungs around it, are associated with the visceral pleura. और इसके अंदर आप बीच में क्या देख रहे हो कि लंग बर्ड्स में प्राइमरी ब्रोंकाई की अपीयरेंस आ रही है, व्हिच आर कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड द टर्शियरी ब्रोंका. और ये सारी चीजें जो है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रही है, विसरल पेरिटोनियम के अंदर जाती जा रही है. इन द नेक्स्ट डायग्राम you can see this thing again very clearly कि यहाँ पर आपके पास जो है वो लंग्स की फॉर्मेशन कैसे हुई. सबसे पहले आपका ट्रेकिया आ रहा है which is going downwards into the primary bronchi. Obviously बीच में हमारे पास larynx मौजूद है, ठीक है, which is now developing into the primary bronchi, secondary bronchi, and the tertiary bronchi, and eventually a time will come that it will form the alveoles in it. और alveoles के साथ साथ these alveoles will get continuously multiply enough at the age, at the childhood age तक जो है आपका alveolar period जो है वो चलता रहता है. और सराउंडिंग जितनी भी रेडिश लाइन आपको जो नजर आ रही है, राउंडेड रेडिश लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली क्या है, जब आपके लंग्स जो है वो प्लूरो पेरिकार्डिनल कैविटी के अंदर जा चुके हैं और वहां से जो है वो सराउंडिंग मेसेनकाइम ने इसको जो है वो स्ट्रक्चर, लंग्स को फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर दिया. सो दिस इज द सेम डायग्राम दैट यू आर सीइंग. This is the same diagram that you are seeing. Now, you can see a diagram again in which you are seeing the presence of the trachea, from 2 to 0. Then you have got in the 1 1 in the sorry 2 to 0 नहीं, Z to 0. From Z means आप उसको रखेंगे from the tracheoesophageal fistula जो आपने डेवलप किया था. फिर आपके पास फर्स्ट फेज आ गया जिसमें आपके पास प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकंड के अंदर आपके अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई, थर्ड में आपके पास टर्शियरी ब्रोंकाई, फोर्थ में आपके पास जो है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रही है, ठीक है ना. सो दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन. फिर आपके पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं. नीचे की तरफ आप आते जाए 20 से 20 21 22 के अंदर आप देख 20 के अंदर आप देख रहे हैं कि एल्वियुलर डक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है. और 23 ऑनवर्ड्स एल्वियुलर सैक की फॉर्मेशन आपके पास कंटिन्यूअसली होती चली जा रही है. So again, this is the repetition of this chart in which you are seeing the maturation of the lung that we have already discussed previously. We have already discussed this thing कि जिसमें आपके पास pseudoglandular period है. This chart is pasted twice, that's why you may understand this thing कि हमने पहले भी इस बात को पढ़ा है और अब भी इस बात को हम उस डायग्राम्स के साथ एसोसिएट करके देखेंगे कि जिसमें आपके पास pseudoglandular period था 5 से 16 वीक, ठीक है,
फिर आपके पास यानी कि मैच्योरेशन ऑफ द लंग्स के 4 फेजेस, सूडोग्लैंडुलर पीरियड, कैनालिकुलर पीरियड, टर्मिनल सैक पीरियड और एल्वियोलर पीरियड। अब से वाइवा में पूछता है व्हाट डिफाइन कैनालिकुलर पीरियड, व्हाट आर द फेजेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द लंग। सो एटलीस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस चार्ट। ठीक है, ये चार्ट आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट दिस चार्ट इज सेइंग। So we have already gone through the chart. So in the pseudoglandular period, ठीक है ना, 5 to 16 or 16, 5 to 6 to 16 mention हुआ हुआ है। So in this phase कि आप जिस वक्त ये देख रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास अभी ये लंग्स बने हैं, लेकिन ये काम के नहीं है। अगर कोई बेबी इस टाइम पे अगर पैदा हो जाता है, कोई बेबी इस टाइम पे अगर बॉर्न हो जाता है, तो इट इज अनेबल टू सर्वाइव। the baby would not be able to survive basically. ठीक है ना, तो these are the diagrams of it in which you are seeing again this phase in which you are seeing the lung part, in which you are seeing the left bronchi and the right bronchi, which is comparatively lower and right, left and right, जो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, उसके साथ साथ the development of the lung in the C shaped in this diagram number C, in which you are seeing again this primary bronchi, the secondary bronchi, the terminal bronchi, in which you are seeing the alveolar sacs in it, which you are seeing all of the structures which are getting compiled in up, compilation होती जा रही है पूरा आपके पास lung, but आपके पास lungs form. So the canalicular period in which the lumen of the bronchi enlarge and lung tissues becomes highly vascularized. ठीक है ना, हाईली वेस्कुलराइजेशन। पहले क्या होता, कोई वेस्कुलराइजेशन नहीं हुई थी। 16 से 26वां वीक के अंदर आप खड़े हुए हैं, और अब आपके पास जो है वो by the 24th week, respiratory bronchioles and the alveolar ducts have comparatively developed enough from the terminal bronchiole. Respiration is possible towards the end of this period, but few fetuses which are born in this time are able to survive, क्योंकि अभी तक लंग्स इतने मेच्योर नहीं है, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, एल्विलीज अभी इतने अच्छे फॉर्म नहीं हुए। तो कुछ बेबीज जो है वो फॉर्म, कुछ बेबी सरवाइव करते हैं, कुछ बेबी सरवाइव नहीं करते, और जो बेबी सरवाइव करते हैं या करते होते हैं, तो दे नीड द वेंटिलेटर एट दिस टाइम, और वेंटिलेटर के ऊपर कुछ सरवाइव कर जाते हैं। सो सर्वाइवल रेट इज नॉट वेरी गुड इनफ। सम ऑफ द बेबीज survive and some of them does not survive basically at the time. So this is again, this is the diagram of another slide, in which you can see that these are the blood capillaries which are associated with them। ठीक है ना, एल्विलीज के साथ ब्लड कैपिलरीज इनके क्लोज कांटेक्ट में आ रही है, जहां से इनको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्होंने करनी है। सो दिस इज अ टाइम कि जिसमें शायद जो सर्वाइवल के चांसेस हो जाए, शायद ना हो। Now, the terminal secular period, the terminal sac period, basically, is an important period in which blood air barriers are developed. ठीक है ना, during the terminal secular period, specialized cells of the respiratory epithelium appears at this time. So these cells are known as type 1 alveolar cells and type 2 alveolar cells. ठीक है ना, so type 2 alveolar cells will secrete the pulmonary surfactant, and type 1 will be acting as the blood air barrier. This is your MCQ. Type 1 is the blood air barrier, BABS, BAB. ठीक है ना, type 1 are your blood air barriers, and type 2 are your surfactant producing cells basically, which reduce the surface tension. So the survival, the during this time, the lungs are like rock-like and will sink if placed in the water, but will expand after the first breath. शुरू शुरू में अभी तक जो है, तो आप देखोगे कि अभी तक लंग्स फंक्शनल नहीं हुए, लेकिन बट व्हेन द फर्स्ट ब्रेथ इज टेकन, जब दुनिया में आने के बाद बेबी डेवलप करता है, बर्थ होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रेडिकार्डियंस एंड द इंटरल्यूकिन्स, जैसी बेबी जो है वो दुनिया में आता है, पहली सांस लेता है, तो जो है वो इनके अंदर एक्सपेंशन होती है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है, एंड दिस इज द डायग्राम इन व्हिच यू कैन सी दैट there is the lymphatic capillaries and the blood vessels are in close contact with the alveoli. So the baby is very good enough to take the breath
this new world. So we are seeing up the characteristic features of a mature alveolus connected to the alveolar duct lined with the type 1 cells, which are intimate contact with the capillaries, as you have seen in the previous diagram. So each capillary is exposed to two alveoli contains the surfactant, has interconnections with the alveoli, and they are known as the pores of cones, basically. If you remember this thing, this is good. Otherwise, it's not very important for you. So the first breath of the baby, is like at birth. The baby's lungs are filled with fluid-filled cavities. They are secreted by the lungs and are not inflated. So when the newborn baby is expelled from the birth canal, its central nervous system reacts to the sudden change and change in the environment and temperature. So this basically what it does, it triggers the birth. It triggers the breath under the influence of that I've already told you, bradykinins and the interleukins, basically within about 10 seconds after the delivery. So the first birth take place. So hormonal influence at birth, epinephrine, ठीक है ना, arginine, vasopressins basically suppress fetal lung fluid production and play a role in its reabsorption. So alveolar period, if you are in the alveolar period, so birth is basically at alveolar period. It takes like about 8 years. It takes about, some books says that it's about like 10 years. The books to books vary within the alveolar period. Basically, just remember this thing. It's up till the child. जब तक जो है वो childhood है, तो terminal जो है वो alveoli जो है वो increase in number. The alveoli just get increase in number, and it just goes on and on. So control of the pulmonary blood flow, physical location of the lung unit, basically the gravity, the oxygen, the nitric oxide. ठीक है? So these are the biochemical factors which are responsible. If you remember this thing, it's okay. Otherwise, no any need of remembering this thing. Cortisols are also responsible, stimulates the corticotropins, basically, which are talking about the cortisols that you have already gone through in the physiology. Cortisol stimulates the fetal lung fibroblasts to produce fibroblast chemocytic factors, stimulates the surfactant production in which type 2 cells are responsible for that. Thyroid hormone is also necessary for the surfactant production as far as its continuous production is needed. ठीक है ना, जहाँ तक उसकी requirement होती है, this goes on and on. So congenital diaphragmatic hernia. We're going up with the congenital diaphragmatic hernia, the muscular skeletal abnormalities of the chest wall, ठीक है ना, and spaces occupying the lesion of the thorax, the pleural effusion, oligohydramnios with the renal and urinary abnormal tracts. So these are the congenital factors which are responsible, which your lungs are not getting properly matured enough. So you have to just look up those factors also, in which you can see that the lungs are not properly getting matured enough. So this is all about the production of the lungs. Okay, so you have to remember, just compile this thing. If you compile this thing, so what is happening? Initially, we have got the lung bud, which is ventral to the ventral to your foregut, and the lung bud just grows down, caudally grows down, and with the passage of time, it has got development of primary bronchi in it, right in the left bronchi, which converts into secondary bronchi, then tertiary bronchi, the terminal bronchioles, and the lungs are now getting into the caudal direction, moving into the caudal direction, and it reaches into the pleuropericardial cavity, and the surrounding mesenchyme would give the space to the formation of the lungs. ठीक है ना, with the passage of time, these lungs are initially the lungs are not very functional enough. There are four phases in it: the pseudoglandular period, the canalicular period, the alveolar period, and the secular period. So as far as your chart is considered,
in which we have just started. Yeah, we have just discussed this chart: terminal sac period, terminal sac period, and the canalicular period that you are seeing this thing. I'm again going with that chart, so we may remember this chart by heart again. हमें चार्ट को हर सूरत में याद करना है, ठीक है ना? I'm just coming up with a chart again. So this chart is saying that you have the pseudoglandular period, you have the canalicular period, you have this terminal sac period, and the alveolar sac period. So alveolar sac period just goes from 8 months up till the childhood. So up till the childhood, like 8 to 10 years of the age, the alveoli just goes continuously develop. ठीक है ना? And the terminal sac period, in which you can see that the terminal sac period is up till the birth, and the canalicular period is like 16 to 26, and the pseudoglandular period from 15 to 16, 5 to 16, 6 to 16, 5 to 16, it is somewhat like that. ठीक है ना? तो जो जो बेबीज अगर हमारे पास बॉर्न कर रहे हैं pseudoglandular period में, they are very unable to survive. They are not able to survive enough. But with the passage of time, if they are in the canalicular period, some of the babies get survived and some of them not. But whenever we are talking about the terminal sac period, yes, the babies are getting survived. They are getting good breaths, and if when they comes out from the birth canal, the environmental factors just triggers its growth interleukins, the bradykinins are responsible, and eventually the cortisol levels and other factors are also responsible for its maturation, and the baby take its first breath. And this breath continues at this if alveolar period is there. So the continuous development of the alveoli and the alveolar sac occurs. Yeah, happens. Yeah, it just goes on till the age of like 8 to 10, and after 10 the alveolar sac period, and this period also stops. So this was all about the development of the lung. If you have any query associated with that, you can ask. So you have, if you have any query. अस्सलाम वालेकुम सर सर आई वांटेड टू आस्क अबाउट यहाँ पे सर चार्ट में मेंशन है कि बर्थ से लेके 8 मंथ्स तक कोई पीरियड मेंशन नहीं है, तो सर बर्थ से लेके 8 मंथ्स तक यानी टर्मिनल सैक जब एंड हो रहा है एंड अलवेलर जब पीरियड स्टार्ट हो रहा है, हाँ, तो 7-8 मंथ्स का डिफरेंस, तो सर उसमें फिर कौन सा पीरियड चलेगा? टर्मिनल सेक पीरियड चल रहा है ना सारे का सारा, बर्थ से लेके बर्थ, ये बर्थ से लेके आप किधर कह रहे हैं? if the birth has occurred, बर्थ के बाद से लेके, बर्थ से बाद से लेके 8 years तक, ठीक है ना? ये सारा टर्मिनल सैक, यहाँ से एल्विलार पीरियड आपका स्टार्ट हुआ, समझ रहे? You just go on with the chart again. Just read the chart again. Is it okay? So, can I have the attendance, please? Your group CRs, kindly send me your attendance, please. Thank you. If you have any query, any issue, you can ask. ठीक है ना? कोई मसला नहीं है, आप कभी भी पूछ लेना. I don't have any issue with that.